जीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो प्रीवियस क्लास रे आमे जनरल साइंस रो किछि क्लास आमे करथिले आ एमसीक्यू आमे मते तार किछि कंप्लीटली सारिथिले। तो तार आज आपण गोटे पार्ट आज गोटे नबा जोडा कि आपनर एमसीक्यू बेसी रहबो आपनर एमसीक्यू रहिबो। तो एथिरा आमे देखिबा इंडियन पॉलिटी बुझिला। तो पॉलिटी ऊपर आमे कोन क्वेश्चन किछि एडे पिक करिसंती। तो ता ऊपर आमे आज किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो जो माने भी प्रीवियस ईयर वीडियो देखि नांती से माने वीडियो फॉलो करंतु कारण आपनर जति की सीरीज आसु जीके सीरीज रो तो ये सब कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो बेस आपनर एग्जाम रे जहा कि आसीथिला बा आसीबो ता ऊपर आपनर गोटे बेसिक नॉलेज बा आईडिया दे होछ जे एति आपनर क्वेश्चन आसीथिला आ एई टॉपिक रो आपन ଟିକେ भल से पढी कि जिवे बुझिला। आपण जानथि जदि पॉलिटी पढिबा बा जनरल साइंस पढ़िबा तार टॉपिक अछि फिजिक्स पढ़िले तो फिजिक्स रो बा बायोलॉजी रो सेक्शन अछि ह्यूमन बॉडी ऊपर हो बा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हो ब्लड हो तो को थ्रू केति क्वेश्चन हमर कंटेंट करूची ता ऊपर हमें गोटे ब्रीफ आईडिया दबा। हम किछि क्वेश्चन नेथिली तो आपण मते से टॉपिक या थरे कोन बारंबार पढी कि जिवे जा द्वारा आपणर क्लैरिटी हे जिवो जे क्वेश्चन केमिति आसे। तो हो आज आम कौन करवा ना आज गोटे नवा पॉलिटी रो 100 एमसीक्यू जोड़ा कि कंप्लीटली एमसीक्यू रहिबो। हाँ आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा मु कहि दोछि एठा आपण कोनोसी पिला भी आर्टिकल खोजिबेनी कारण एई 100 क्वेश्चन भितर आपनर गोटे दिटा आर्टिकल थिले थिबो बाकी कोनोसी आर्टिकल नाही कारण मु कहिछि आर्टिकल ऊपर मु गोटे कंप्लीटली वीडियो बनै दिछि आपण जाकी प्लेलिस्ट रे सेटा देखि पारिबे बुझला। तो सी गोटे पूरा भल से एक्सप्लेनेशन सहित आपन को एमसीक्यू किंतु बहुत एक्सप्लेनेशन सहित आपन को पढ़ाई तो आपण जाई सेटा देखिबे जा द्वारा आपन ए गोटे वीडियो प्लस आर्टिकल रो वीडियो आपनर कंप्लीट हे जिवो बुझला। तो चलंतु लेट न करिवि चलो स्टार्ट करबा आज रो क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपन आगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर फाइनेंस इमरजेंसी इन इंडिया। तो फाइनेंस इमरजेंसी किए भितरो डिक्लेयर करते तो ये जीवे के ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असंदे जानछंती तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जीवे के द्रौपदी मुर्मू। हाँ आम फास्ट 10 क्वेश्चन टी स्लोली करबा तापर नेक्स्ट टाइम स्पीड अप करबा पहला। तो फाइनेंस इमरजेंसी पे आर्टिकल हे जीवे के 360। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आसिला हु अपॉइंट्स द एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया। तो एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करती तो ये आपण आंसर हो कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल हो केते 76। तो आर्टिकल ऊपर आपण कंप्लीट वीडियो अछि आपण देखिबे सेटा जागी। नेक्स्ट आसिला अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा किए जिवे तो सी किए जिवे ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडिया किए हे जिवे कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार एबारे तो ये हे जिवे के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आसला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द देश। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का द्वारा एडॉप्ट होइथिला एबारे तो ये आंसर हो कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है 1946 ईयर मन इंपोर्टेंट हो आपण पे। नेक्स्ट आसला हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रेसिडेंट किए हे जिवे परमानेंट प्रेसिडेंट
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली परमानेंट प्रेसिडेंट किए तो ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन रखिए। नेक्स्ट आखिला which of the following was adopted from the Mauryan dynasty in the envelope of government of India। तो मौर्यन डायनेस्टी को एनवेलप आसी जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज हुए तो ये जीव कौन 4 लायंस। नेक्स्ट आसला who among the following is known as the father of the Indian constitution। the father of Indian constitution काहू कहबे कहबे तो ये जीव कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिबा तो देइछि द फर्स्ट सीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट सीजन कोड हेतिला कौन हो तो ये जीव कौन न्यू दिल्ली बुझिला। नेक्स्ट देखिबा द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आइडिया कार थिला पचारछि तो से जीव कि एम एन रॉय। नेक्स्ट देखिबा फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज तो क्वेश्चन कही फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन रु आना जाइए को कंट्री रा कॉन्स्टिट्यूशन रु फंडामेंटल ड्यूटीज आना जाइए तो ये हो कौन यूएसएसआर। नेक्स्ट देखिबा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर दिस तो आपन तो देइछि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि आर्टिकल 32 तो ये का अंडर रे आसे फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नेचुरल राइट्स तार करेक्ट ऑप्शन हो कौन ना ये फंडामेंटल राइट्स रे आसे अपन। नेक्स्ट देखिबा द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज तो आपनर टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज केतेटा अछि जानथियो समस्ते तो फंडामेंटल ड्यूटीज केते हिजो 11 तो 10 थिला प्लस गोटे ऐड हिजो 11 हिजो ये तब आर्टिकल केते आसीबो 51 ए बुझिला फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट देखिबा which part of the constitution deals with the directive principle of state policy तो को पार्ट रे आपनर डीपीएसपी अछि ओ किछ नै ती पचछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ये जीव कौन पार्ट 4 जी द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टेस्ट तो आपन पचार ना प्रेसिडेंट रूल केते पर्यंत रही परिबो बा केते मंथ पर्यंत रही परिबो बा केते ईयर पर्यंत रही परिबो तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड अप टू 6 मंथ बुझिला आपण सब किसी इजी क्वेश्चन नहीं कौन सी डिफिकल्ट नहीं। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो जो आपनर नेशनल इमरजेंसी लगे आर्टिकल के 350 हो तो नेशनल इमरजेंसी जो चले बा लगे तो कौन ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड तो जो प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी लगे तो कौन हुए तो ऑप्शन आप चार्टा ऑप्शन अच्छी तो कौन हो पार तो नेशनल इमरजेंसी लगे कहीपर तो आप कौन ऑप्शन बी हो कौन करेक्ट आंसर ना आप आर्टिकल 20 and 21 कौन सस्पेंड हम ना मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना आर्टिकल 20 and 21 आप सस्पेंड हेनी जो नेशनल इमरजेंसी लागू हम। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट सीजन ऑफ लोकसभा
was held in which among the following years? The first season of Lok Sabha ଆପଣର କେବେ ହେଇଥିଲା ପଚାରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ସିଜନ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଇୟର ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1952 ଇୟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ପଚାରିଛି ତ ଡେଟ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ କେତେ 28 ମେ 13 ମେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଡେଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆପଣର ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ 81 ହେଇଯିବ ହେଲା 79 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 80 राज्यसभा 81 हूँ कौन लोकसभा ये जिन मन रखिए है नेक्स्ट आसला विथ शेड्यूल ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेज तो आप कौ शेड्यूल रे लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज कंटेन्स कौन हो आप करेक्ट ऑप्शन हो कौन ना 8th शेड्यूल आप लैंग्वेज रिलेटेड नेक्स्ट देखा who among the following decides the foreign policy of India तो फॉरेन पॉलिसी किए डिसाइड करे फॉरेन पॉलिसी पचार तो फॉरेन पॉलिसी किए प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट देखा 90 who become the first governor general of the new dominion of India the first governor general of new dominion of India पचार तो ये ना लॉर्ड माउंटबेटन नेक्स्ट आसला व्हाट इज द मैक्सिमम एज till which EPSC chairman and members can hold office तो आपन पचार यूपीएससी चेयरमैन आ मेंबर मान रिटायर्ड एज केते मैक्सिमम एज केते तो ये कौन 65 नेक्स्ट देखा who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution तो preamble किए इंट्रोड्यूस करथिले पचाची who proposed the preamble before the drafting committee on the constitution कौन हो आंसर हो कौन ना जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट आसला व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्रुटमेंट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली तो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर हाँपी मिनिमम एज केते दरकार दरकार तो हो के 25 इयर्स नेक्स्ट देखा हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन किए आम ए पढ़ले एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज हेल्ड आफ्टर 1 year 2 year 3 year 4 year तो राज्यसभा इलेक्शन प्रति केते वर्ष थे हुए तो इयर हो इंपोर्टेंट के 2 year नेक्स्ट देखा हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो का द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट हुई CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो सी कहे ना प्रेसिडेंट नेक्स्ट आसला which is at the apex of the 3-tier system of पंचायत राज तो ये भितर कोड़ा apex बॉडी पंचायत राज पंचायत राज सिस्टम रो कोड़ा apex बॉडी कह कौन तो ये कौन ना जिला परिषद नेक्स्ट आसला पंचायत राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन तो पंचायत राज के स्टार्ट होता पचार तो ईयर हो कौन
1952। ओके, तब नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट आछि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का को कहा जाए? तो सीखे जिवे ना लॉर्ड रिपन हला। नेक्स्ट देखिबा द अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर एम्फासिस ऑन। तो आपण डायरेक्ट क्वेश्चन आसी ना कोन अशोक मेहता कमिटी का सहित रिलेटेड? ग्राम सभा, मंडल पंचायत, तालुका पंचायत समिति, जिला परिषद। तो अशोक मेहता कमिटी सहित आपण कोन जिवे ना मंडल पंचायत रिलेटेड। नेक्स्ट देखिबा द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय। तो सी पचार जदि कौन सी स्टेट्र ना परिवर्तन करा जिवो बुझिला तो कार परमिशन रिक्वायर्ड सी पचार एटा का हाथ अच्छी। तो सी जीव कौन ना यूनियन पार्लियामेंट हूँ कौन द यूनियन पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ इंडियन स्टेट बुझिला। तो पावरटा केवल ता पाखे अच्छी क्या पाखे पार्लियामेंट पाखे। नेक्स्ट देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। तो पचार एडॉप्टेड पचार लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। तो डेट हो नवेम्बर 26 1949 किंतु लागू है कहते जनवरी 26 1950 बुझे। नेक्स्ट देखिए हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पीएम क्या द्वारा अपॉइंट हुए? तो आंसर है कौन ना प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए द फास्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्री इंडिया वाज। तो ये आप पचार फास्ट गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। तो देश स्वाधीन होगा पर फास्ट वुमेन गवर्नर किए हो? तो समस्त जानते ना किए ना मिसेस सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आसला इनकेस ए प्रेसिडेंट इनकेस इनकेस द प्रेसिडेंट है इनकेस द प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस ए था ठीक अच्छे इनकेस ए प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज। तो सी पचार जदि प्रेसिडेंट तांको ड्यूटी समय मृत्युवरण करती तो वाइस प्रेसिडेंट केते टाइम पर्यंत तांको ऑफिस को होल्ड करती बा तांको दायित्व तुलांती? तो मैक्सिमम केते जो मैक्सिमम 6 मंथ है। नेक्स्ट आसला हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इम्पीचमेंट कहा द्वारा हुए? तो ऑलरेडी जानते हो ये कौन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट द्वारा हुए लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट आसवा हु एमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट रो मीटिंग को माने अटेंड करि परिबे? तो ये हेबो कौन कैबिनेट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आसला द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम emergency on the written advice of the Speaker of Lok Sabha, Prime Minister, Chief Justice of India, Union Cabinet। तो प्रेसिडेंट एमरजेंसी घोषणा करेंगे कहार एडवाइस रिटेन एडवाइस द्वारा पचार। तो सी कौन प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आसला द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू। तो आपण जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स क्या पाखे उत्तरदायी बोली किसी। तो सी कौन प्राइम मिनिस्टर बुझे कारण प्राइम मिनिस्टर ही कौन कैबिनेट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड तांगे तो पाखे ही उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखिए हु इज द एक्स ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स किए जिवे तो ये जिवे कोन वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस कोन राज्यसभा हला राज्यसभा नेक्स्ट देखिबा इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन recognition by the political party आख्या इंडिया रे किए दिए इलेक्शन कमिशन स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट लॉ कमिशन तो ये जो कौन ना इलेक्शन कमिशन आपणर निर्वाचन बा पॉलिटिकल पार्टी रो लोगो हो पॉलिटिकल पार्टी हो तो से डिसाइड किए करे ना इलेक्शन कमिशन या को डिसाइड करे बुझला तो नेक्स्ट देखिबा देजी द प्रेसिडेंट nominates person to the Lok Sabha and Rajya Sabha in that order तो केते जण हे जिवे the president nominates to the Lok Sabha and Rajya Sabha in that order तार आंसर हे जिवे केते ना 2 and 12 तो लोक सभा 2 राज्य सभा जो 12 नेक्स्ट देखिबा द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड इन देश तो आपण पचारछि ना कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी तो हे जिवे कोन ना ब्रिटेन नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केबे स्टार्ट हेतला बचस अकाउंट 1950 हे जिवो ईयर नेक्स्ट देखिबा द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ता हमर को प्रकार गवर्नमेंट तो हे जिवो कोन ना पार्लियामेंटरी बुझिले नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया द फर्स्ट जनरल इलेक्शन भारत रे केबे हेतिला पचारछि तो ईयर हे जिवो केते 1951 रु 52 तापर देखिबा द मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज तो सी पचारिया कथा जन को मैक्सिमम एज केते हेतिबो मिनिमम तो 35 कि मैक्सिमम केते हेतिबा दरकार जन प्रेसिडेंट आ तो सेंति कोनोसी लिमिट नाही बुझिला 35 प्लस हेतिबा दरकार कि बिलो किछि हे जाउ नाही हला ना एति भितरे एज हेतिबा दरकार नेक्स्ट देखिबा how many types of emergency have been visualized in the constitution of India तो केते प्रकार इमरजेंसी आपन देखिबा मिलुछि तो ये जिवो केते 3 टाइप्स गोटे नेशनल इमरजेंसी गोटे स्टेट इमरजेंसी आ गोटे होछि कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी नेक्स्ट देखिबा द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉस थ्रू ऑर्डिनेंस only on subject contained in the concurrent list under no circumstances on certain subject even when parliament is in seasons during the recess of the parliament तो पचाजी प्रेसिडेंट केतल लॉ मेकिंग करि परि पॉइंट केतल ना ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट नेक्स्ट देखिबा द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट means that the state is ruled by a caretaker government the chief minister nominated by the president the governor of the state the president directly तो किए जिबे ना द गवर्नर ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट रूल लागे तो स्टेट का दर शासन हुए ना द गवर्नर ऑफ द स्टेट नेक्स्ट देखिबा अंडर which article of the constitution is the president's rule promulgated on any state in India तो आपण स्टेट इमरजेंसी डायरेक्ट क्वेश्चन जदि आसी पचारि स्टेट इमरजेंसी आपण को आर्टिकल को रेफर करूछ तो ये जो आर्टिकल 356 बुझिले हम कहि दीटा कि तीनटा आर्टिकल में लिखिछि बाकी आपण आर्टिकल वीडियो आपण देखिबे प्लेलिस्ट रे आपण वीडियो अछि कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन सहित मु
सब आर्टिकल कवर होती। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द प्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो किए हो यहाँ प्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो आप समस्त प्रिय किए हो यूएसए। नेक्स्ट देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप डुअल सिटीजनशिप्स बोथ ऑफ देम नेदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट देखिए जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स गवर्नर द प्रेसिडेंट द चीफ मिनिस्टर। किए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए पंचायत राज वाज द फास्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो पंचायत राज आपणर को स्टेट रे फास्ट आसीला लागू होता को राज्य फास्ट या एडप्ट करते। तो ये कौन राजस्थान। नेक्स्ट देखिए व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी केबे लागू होता। तो ईयर समस्त मन रखिए 1962 किंतु ये मंथ मन रखिए अक्टोबर। नेक्स्ट देखिए द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सी पद सी ए जी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल के 148। तो याकर टर्म बा कार्यकाल केते वर्ष पचार तो ये 6 इयर्स। Next, which among the following states returns the maximum numbers of the representatives to the Lok Sabha? तो को स्टेट रो लोक सभा रे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव अछंती। क्वेश्चन डायरेक्ट आ किछ नै। एमपी मध्य प्रदेश बा महाराष्ट्र बिहार उत्तर प्रदेश। तो कौन है ना ये जो यूपी है उत्तर प्रदेश। द सरकारिया कमिशन वाज सेट अप टू एग्जामिन। तो सरकारिया कमिशन का सहित रिलेटेड एति क्वेश्चन आ किछ नै। तो ये कौन ना सेंटर स्टेट रिलेशन सहित सरकारिया कमिशन रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय वीटो पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीटो पावर सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखे वीटो पावर अच्छी कि से जिन पचार आ कि। तो ये कौन आंसर ये सब। नेक्स्ट देखिए द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट rests with the PM head of the state parliament council of ministry कौन है तो ये कौन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। पार्लियामेंट कौन राज्यसभा लोकसभा। तो लोकसभा रे कौन रूलिंग पार्टी बा जी शासन कर सरकार थाए बुझे। तो ये कौन करेक्ट आंसर हो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हो। तो समस्त जानते कौन हम उर्दू। नेक्स्ट देखिए हु एमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबुठु लॉन्गेस्ट टेन्योर बा कार अधिक समय धरी ये प्रेसिडेंट पदवी थे। तो यूजली कौन है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए हु एमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर कम दिन पे प्राइम मिनिस्टर किए थे। तो ये के चरण सिंह। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट born in 1953 was लैंग्वेज बेस अनुसार फास्ट स्टेट होता कि होता पचार बास। तो ईयर हो 1953 स्टेट हो कि आंध्रा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी shall be appointed by the।
The special officer for the ST and SC shall be appointed by, तो कहा द्वारा नियुक्ति होती, तो समस्त जानते किए जिवे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिबा which among the following does not from does not form part of the preamble, तो ए भितर को वर्ड आपनर प्रिएम्बल रु नाही, कौन हो, तो ये कौन फेडरलिज्म है। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज, तो राज्यसभा पे मेंबर होगा पई मिनिमम एज केते दरकार बा हेतिबा दरकार, तो ये कौन 30 इयर्स। नेक्स्ट देखिबा द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर इज, सेटा हमें पढ़थले एटा केते जिवो ना 6 इयर्स। नेक्स्ट देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे इंडिया को कौन वर्ड वर्णन करा जाय छी, कहि परिया कौन हो परिबो, तो ये जो कौन यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देखिबा स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर कहा द्वारा इलेक्टेड होती, कौन हो परिबो, इजी क्वेश्चन, तो ये जो कौन ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखिबा द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस हैव बीन क्रिएटेड बाय द, तो सी पचार ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आ पुलिस सर्विस कहा द्वारा क्रिएटेड हो कहा द्वारा बना जाए, तो ये जो कौन पार्लियामेंट है, जदि कौन से आपनर यूपीएससी अंडर हो कौन से गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बना हो तो सी दायित्व कार पार्लियामेंट रो। नेक्स्ट आसला हु इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, हु इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, ठीक है जिवे ना गवर्नर। नेक्स्ट देखिबा द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंड, तो प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केते थर संशोधन करा जायछि पचाछि, तो हे जिवो केते वंस आ गोटे थर हिस। नेक्स्ट देखिबा स्टेट गवर्नर्स आर रेस्पोंसिबल फॉर देयर एक्शंस टू द, तो स्टेट गवर्नर का पाखे उत्तर दे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट हो। नेक्स्ट देखिबा द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज लिमिटेड टू, तो मैक्सिमम मेंबर इन राज्यसभा 50, तो ये जो 250। नेक्स्ट देखिबा द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय द, तो सी डायरेक्ट क्वेश्चन आसी ना पचार 3 टायर पंचायत राज सिस्टम सहित को कमिशन रिलेटेड बा को कमिटी रिलेटेड, तो ये जो कौन बलवर्थ राय मेहता कमिटी है। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अक्टोबर 1962 लास्टेड टिल 1965, 1966, 1967, 1968, तो ये जो कहते हैं 1968। A person who otherwise qualifies for appointment as a High Court judge must have been an advocate of High Court for not less than 5 years, 10 years, 12 years, 15 years. Year आसियो सब year, तो सी पचारिया कथा कही जब जड़े हाईकोर्टर जज होगापी
ताकू केमिति चूज करा बा तार क्वालिफिकेशन कौन होइथिबा पड़ियो तो सी कौन होइथिबो ना एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट से कौन होइथिबो गोटे एडवोकेट थिबो हाई कोर्ट रो मिनिमम केते वर्ष से एडवोकेट थिबो बोल पछ नॉट लेस देन बा ताठू कमिले हबनी कौन हो तो ये हो के 10 ईयर नेक्स्ट देखिबा हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यही 4 जन भितर किए प्रेसिडेंट का द्वारा अपॉइंट होती नहीं बा प्रेसिडेंट एमान को नियुक्ति करती नहीं तो सीएजी ऑफ इंडिया कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होती ये ठीक अच्छी नेक्स्ट एंटर्नी जनरल ये भी हम चीफ इलेक्शन कमिशन आगे भी हे कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा हे कारण ये मेंबर द्वारा बछा जाती नेक्स्ट देखिए द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एन इंडिविजुअल मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो सी कहार अच्छी जब प्रेसिडेंट जड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जड़े मिनिस्टर को रिमूव करेंगे बाहर करेंगे केमी करेंगे तो क्या द्वारा ना ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम द एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनियन पार्लियामेंट मस्ट मीट एवरी ईयर तो पार्लियामेंट यूनियन पार्लियामेंट वर्ष केते थर मिशंती बा केतेटा सीजन हुए बोली पचार मिनिमम पचार तो 82 ऑप्शन द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के सुकुमार सेन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर द रेसिडुअरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस वेस्ट विथ द रेसिडुअरी पावर का हाथ में न्यस्त तो रेसिडुअरी पावर आसला मीन जानवे कौन यूनियन पार्लियामेंट नेक्स्ट देखिबा हु एमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू sanction the expenditure of public money in India तो ये जो कि ना प्रेसिडेंट नेक्स्ट देखिबा तो देछि कोन हु एन्जॉय ठीक है भूल है ये ना हाँ ये जो कौन ना यूनियन पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट भूल हु एमंग फॉलोइंग has the final right to sanction the expenditure of public money in India public money of in India है जो कि पार्लियामेंट सहित रिलेटेड नेक्स्ट देखिबा आप ठीक करेक्शन करिवे यूनियन पार्लियामेंट है नेक्स्ट देखिबा हु एन्जॉयज द राइट टू इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स तो फंडामेंटल राइट्स जदि आसिला रेस्ट्रिक्शन कथा आसिला तो किए आसियो यूनियन पार्लियामेंट नेक्स्ट देखिबा which one of the following reads is considered full work of individual freedom तो full work of individual freedom को reads सहित associated तो कौन हो ना हॉबीज कॉर्पस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसला which language was added to the list of regional language by the 21st amendment तो 21st amendment अनुसार को लैंग्वेज को ऐड है तो ये जो कौन सिंधी लैंग्वेज नेक्स्ट आसला salaries of the judge of the supreme court india are specified in the schedule तो salary of the judges of the supreme court को schedule रे लिखा जायछि बा included ये जो कौन सेकंड शेड्यूल नेक्स्ट देखिबा राइट टू एजुकेशन बिल envisages to provide free education to the children of the age group of तो राइट टू एजुकेशन बिल रे केतेरु केते वर्ष पिलान को फ्री एजुकेशन विषय रे कह जायछि क्वेश्चन रो मीनिंग एति आ किछ नै कोन जिवो ये ना 6 रो 14 इयर्स नेक्स्ट देखिबा द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली
shall be appointed or elected by the President, Lieutenant Governor, Delhi Assembly, Chief Administrator, Delhi Assembly or Chief Administrator. तो ये जो कौन ना President. The cabinet mission to India was headed by. तो cabinet mission को किए हेड करथिले? तो ये जो कौन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस मन रखिबे ना. Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? The constitutional advisor किए हिजबे? BN राव मन रखिबे ହେଲା important question ये सब. Who presided over the inaugural meeting of the Constitution Assembly of India? टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थिले बोले पचारछि. टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. परमानेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिजबे. टेम्पोरारी किए हिजबे सच्चिदानंद सिन्हा. ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. तो एटा हम देखले कोन ना ये जो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड होबनी बुझला. तो ऑप्शन बी है जे आपनर करेक्ट आंसर. मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू. तो मेंबर ऑफ राज्यसभा केमिति इलेक्ट होंदी पचारछि आ किछ नै. तो ये जो कोन ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ऑप्शन सी आपनर हिजबे एठे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए द लोकसभा इज कॉल्ड इन सीजन फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर. तो लोकसभा केते गोटे ईयर रे केते थर मीट करंदी सेटा तो पार्लियामेंट पढ़थिले. एटा कोन हो लोकसभा खाली 50. तो 3 टाइम्स. नेक्स्ट देखिए द राज्यसभा कैन बी डिजॉल्व्ड बाय. तो राज्यसभा केमती डिजॉल्व हुए. तो ये जो कौन ना राज्यसभा के डिजल्व हुए बा राज्यसभा कौन ना लोकसभा हूँ रूलिंग पार्टी जी बर्तमान सरकार चलाऊ सी हूँ कौन लोकसभा. राज्यसभा के डिजल्व हेनी तार 2 ईयर प्रति 2 ईयर तार कौन मेंबरशिप चेंजेस हुए बुझे. तो मन रखिए लोकसभा डिजल्व हम कि राज्यसभा डिजल्व हेनी. लोकसभा के डिजल्व हम जो रूलिंग पार्टी जी बर्तमान शासन कर सरकार जो भांगी सी कौन डिजल्व हो राज्यसभा डिजल्व हम बुझे. नेक्स्ट देखिए द फास्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया. तो ये जी कौन ना सरोजिनी नाइडू. तो ये रिपीटेड है क्वेश्चन दीटा. नेक्स्ट देखिए ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर स्टैंडिंग इन ए पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ. तो जड़े सी कही पंचायत इलेक्शन रे ठिया केते वर्ष होता दरकार. तो ये के 21 ईयर 21 इयर्स. तो ये थी आपणर कौन टोटाल 100 MCQ. आपड़ जब पॉलिटर काढ़े मिनिमम 700 क्वेश्चन आसो बुझला. किंतु मु किसी नहीं आपण एग्जाम पे फास्ट हूँ अपॉइंटमेंट किए क्या अपॉइंट करती. 2 रहा किए क्या रिजाइनेशन दिखती बुझला. अपॉइंटमेंट रिजाइनेशन बा किए क्या रिजाइन दिखती है. 2 3 रहा आप आर्टिकल देखिए भलसे. 4 हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए है. मोस्टली 4 टॉपिक्स आपनर क्वेश्चन आसे बुझला. आउ हेड को ऑफिस हाँ टेन्यूर देखिए आप टेन्यूर आउ एज देखिए. 5 नंबर हूँ कौन ना टेन्यूर कार केते वर्ष कार्यकाल देखिए प्लस एज देखिए जी बुझे. मिनिमम 4-5 आप टॉपिक पिक करेंगे इजिली आपड़ हो. तो वीडियो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद. जो मैंने वीडियो देखले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे. जय हिंद वंदे मातरम.